ओके, तो हम जो है लास्ट क्लास में हमने मई जून 2020 का पेपर 4-2 स्टार्ट किया था, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वी हैव एंडेड ओवर हेयर। हमने यहाँ पे केएसपी एक की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। When a few centimeter cube of concentrated calcium nitrate is added to a saturated solution of calcium iodide 5, a white precipitate is formed. Identify the white precipitates and give an example for this reaction, explanation for this observation. Okay. तो जी, आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है which compound is basically of white precipitate? Okay, so see, as they are uh, there is a calcium nitrate which is aqueous, and this calcium nitrate is added to a saturated solution of calcium iodate. Okay, let me recall. अगर आप यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, and they have told us that it is a sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt का मतलब ये है, it means that it is comparatively or relatively less soluble. So it means basically saturated solution में, if it's a saturated solution, then all the solid is basically dissolved to form calcium ions and iodate 5 ions. ठीक है, अब आपने उसमें क्या कर दिया, फर्दर कैल्शियम नाइट्रेट ऐड कर दिया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द solubility of nitrates, all nitrates are completely soluble, so it get dissolved in the same solution, in the same container. So we again get a calcium ion and 2 moles of nitrate ion. So see, if both the solutions are present in a same container, so both have a one common ion, that is a calcium ion. So what will happen, that there is an increase in the concentration of calcium ion, due to which the sparingly soluble salt, the ions of the sparingly soluble salt shifts towards the left, forming solid calcium iodide, which means जो precipitates form होंगे वो आपके किसके होंगे, कैल्शियम आयोडेट के होंगे, CaIO3 ट्वाइस के होंगे. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अगर किसी को ये बात या ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो प्लीज पूछ लीजिए. So how we will write the answer, that white precipitates are of calcium iodate and why this has happened, it is because its solubility decreases due to common ion effect. As we have put another salt, calcium nitrate, and that have a
one common ion, that is a calcium ion, and due to this calcium ion, that this is a common ion, so it causes the effect which is called common ion effect, and due to its effect, the solubility of a less soluble salt actually further decreases, due to which it forms precipitate. If anybody have any doubt or any confusion, kindly ask. जी बेटा सबको clear है? Yes, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, iodized salt is sodium chloride mixed with a small amount of sodium iodate 5. Okay. 50 gram of iodized salt is dissolved in distilled water. It's a 50 gram. And the solution was made up to 50 centimeter cube in a volumetric flask with the distilled water. Okay. So from this, I can make a data about the iodized salt, that its mass is 50 grams, and the volume in which that mass is dissolved is 250 centimeter cube. Then 50 centimeter cube of this solution is pipetted into an excess of aqueous acidified potassium iodide. So out of this 250, 50 centimeter cube is basically mixed in a acidified potassium iodide. It's acidified one, which means excess hydrogen ions, and it is in excess. The iodine produced requires 12.4 centimeter cube of 0.02 mole per dm cube sodium thiosulfate for complete reaction. Okay, so this is the reaction 1, and then this is the reaction 2. And here we have the equation for the reaction 1, and here we have the equation for the reaction 2. Calculate the mass of sodium iodate 5 present in 50 gram of iodized salt. Okay, so first let me know if anybody have any confusion in understanding the question. Otherwise I will proceed. बेटा अगर किसी को भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. सर जो आयोडाइज सॉल्ट में 50 ग्राम मास है, क्या वो सेम 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास? नहीं, देखें, if you see, read the statement, 50 gram of iodized salt is dissolved in distilled water. So it means that is solid. और iodized salt है क्या? अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो वहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. अच्छा, पहली तो बात ये कि ये जो 50 ग्राम मास है ये किसका है? इट इज ऑफ अ सॉलिड. और वो सॉलिड बेसिकली क्या है जी? दैट सॉलिड इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड NaIO3. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है. ये बात क्लियर है? यस सर. जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ओके, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन बता दी कि 50 ग्राम को मैंने 250 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया, और उस 250 सेंटीमीटर क्यूब में से 50 सेंटीमीटर क्यूब को पोटेशियम आयोडाइड और एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स किया, तो आपके पास ये रिएक्शन 1 हो रहा है. ये बात क्लियर है? और फिर
उस रिएक्शन 1 में जो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है, that iodine is basically used over here according to this statement. सर दूसरे वाले रिएक्शन की स्टेटमेंट कैसे प्रूव कर? जी अर्श, आपकी आवाज प्लीज कैन यू रिपीट? सर दूसरे वाले रिएक्शन की स्टेटमेंट है ना, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा। दूसरे वाले रिएक्शन के बाद तो पहले जो स्टेटमेंट लिखी है तो आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है या आपका नेट की कनेक्टिविटी का इशू है? दूसरे वाले फर्स्ट रिएक्शन में जो आयोडीन फॉर्म हुआ है, that iodine is being used in reaction 2 with the thiosulfate. आपका क्वेश्चन क्या है अर्श? कैन यू रिपीट अगेन? सर मैंने आपको चैट पे लिख दिया। व्हाट्सएप पे मुझे प्लीज भेज दें। एक मिनट रुकें। देखें, सेकंड रिएक्शन के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है, उस आयोडीन से जब हमने थायोसल्फेट को रिएक्ट करवाया तो थायोसल्फेट का 12.40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और थायोसल्फेट का वो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.00200 मोल पर डीएम क्यूब थी, इस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन का 12.4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज हुआ है। ये सेकंड स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट का रिएक्शन है, आपको दिया हुआ है। ये बात यहां तक क्लियर है? यस सर। Okay. Now they are asking, calculate the mass of sodium iodide present in 50 gram of iodized salt. देखें ऊपर हमने क्या कंक्लूजन किया था कि जो 50 ग्राम iodized salt है, it have a sodium chloride and sodium iodate, and they are asking about the mass of this only out of 50 grams. ये बात सबको क्लियर है जी? अगर किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब देखें इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, तो मुझे प्लीज वैल्यूज बताते रहिएगा। आई एम गिवन विद द वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट along with the concentration of thiosulfate, right? तो मैं उससे क्या कर सकता हूं कि I can find the moles of thiosulfate. So if I go for the moles of thiosulfate ions, that they can be 12.40 into 0.002 divided by 1000. So I will get the moles of thiosulfate that are reacted. ये बात क्लियर है सबको जी? Okay. Yes, sir. So can anybody tell me the answer? 2.48 exponent -5. 2.48 exponent. Can you repeat the power of the exponent? -5. -5 moles of S2O32 negative that are reacted. Okay.
अब देखें इसने रिएक्ट किससे किया है, आयोडीन से किया है, एंड दैट आयोडीन इज कमिंग फ्रॉम द रिएक्शन 1. सो व्हाट आई कैन डू, I can take the mole ratio of S2O3 and iodine, and that mole ratio is 2:1, which means if 2.48 exponent minus 5 moles of S2O3 to negative are used, then the x moles of iodine are used. और अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगी, 2.48 exponent minus 5 divided by 2 and multiply by 1. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1.24 exponent minus 5 moles of iodine. अभी आयोडीन के कौन से मोल्स हैं जी? जो थाई सल्फेट के साथ रिएक्ट किए हैं। ठीक है, गुड. तो हम इसको दो स्टेटमेंट दे सकते हैं, दीज आर द मोल्स ऑफ आयोडीन. आई कैन से रिएक्टेड विद thiosulfate, or I can say formed in equation 1 in reaction 1. ये बात क्लियर है सबको? क्योंकि जो थायोसल्फेट के साथ आयोडीन ने रिएक्ट किया है वो इस फर्स्ट रिएक्शन में जो आयोडीन के मोल्स फॉर्म हुए हैं वही उन्हीं मोल्स ने यहाँ पे रिएक्शन किया है. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. ओके, अच्छा. अब इसकी हेल्प से मुझे आयोडेट के मोल्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन 1 को यूज करूं तो रिएक्शन 1 में आयोडीन के कितने मोल्स फॉर्म हुए हैं, 1.24 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल्स फॉर्म हुए हैं, जो कि जिन्होंने रिएक्शन 2 में रिएक्ट किया है. तो अगर मैं इनको आयोडेट के मोल से रिलेट करूं और इनका रेशियो लूं तो इट वुड बी 3:1, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 मोल्स हैं आयोडीन के एंड आयोडेट का 1 मोल है. सो इफ iodine that is formed in reaction 1 are 1.24 exponent minus 5, then the moles of iodate which were reacted are x. तो अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.24 exponent minus 5 multiply by 1 divided by 3. So can anybody tell me the answer? 4.13 10 to the power minus 6. 4.13 13 into 10 raised to the power minus 6. minus 6. These are the moles of iodatides. अच्छा, iodatides का सॉल्यूशन था, तो ये कितने वॉल्यूम में उस सॉल्यूशन के मोल्स हैं? 50 centimeter cube. 50 centimeter cube, because in the experiment we have used 50 centimeter cube, right? और टोटल जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था वो कितना किया था, 250 सेंटीमीटर क्यूब किया था. तो आई कैन मेक अनदर रेशियो that 50 centimeter cube of solution contain 4.13 exponent minus 6 moles of iodate. So if the volume is 250 centimeter cube, then the number of moles are x. So you will have to calculate again the x, which are the number of moles into 50 centimeter cube. So it would be 250 times 4.13 exponent minus 6 divided by 50. So can anybody tell me the answer? 2.06. 2.06. 2.06.
G. G. Exponent minus 5. Exponent minus 5. Okay, first tell me it's a 2.06 or it's a bigger figure. 065. 0.065. 065. तो देखें आप लोगों को 4.07. यस, कल भी ये बात रिपीट की थी। अब यहाँ पे या तो आप 2.065 लिखें, अदरवाइज अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख रहे हैं तो आपको राउंड ऑफ करेंगे, इट वुड बी 2.07 एक्सपोनेंट minus 5. So these are the moles of iodate ion. और देखें iodate ion का 1 मोल प्रेजेंट है एक सोडियम आयोडेट में। तो ये मेरे पास मोल्स आ गए, किसमें आ गए, किसके आ गए, आयोडेट आयंस के आ गए, किस सॉल्यूशन में आए, इनटू 50 सेंटीमीटर क्यूब में आए। अब मुझे अगर मोल्स मिल गए एंड आई हैव टू फाइंड द मास, सो वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू number of moles times mr. So the number of moles are 2.07 exponent minus 5 multiply by sodium is I suppose 23, आयोडेट का मुझे कोई कंफर्म करे, मुझे याद नहीं, आई थिंक 56 है या 53 है, नहीं, नो इट्स 127 आई सपोज, एंड 3 oxygens is 48. Yes, can anybody tell me the AR of iodine? 126.9. 126.9. अच्छा, सोडियम का भी चेक कर लें, 23 है, 23.1 है, 23. 23 plus 126.9 plus 48. So what will be the MR then? 197. 197.9. So I got the MR. So if I multiply these moles with 197.9, I will get the mass. Can anybody tell me the answer? .09 into exponent minus 3. 4.09 into 10 raised to the power minus 3. अच्छा, 09 के बाद कोई और फिगर तो नहीं है? ये actually 4.0866 है. Okay. So 4.09 exponent minus 3. So 4.09 exponent minus 3. जी, ये क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। Okay, then the half equation for the reduction of iodate 5 ion is shown. Use from the data booklet to predict whether a reaction is feasible when aqueous solution of acidified iodate ions and bromide ions are mixed. Explain your answer. Okay. So let's have a look for the bromide ions half equation from the data booklet. Okay, so it's an alphabetic order, और उस alphabetic order में आप देखें तो here we have only there is a one equation in which there is a bromide ion and its value is positive 1.07, and bromide ion is on the right hand side, which means it will undergo oxidation. Okay, now let me rewrite this equation over here for so we can compare easily. That bromine molecule is gaining 2 electrons, so each bromine atom of the molecule gain 1 electron, forming 2 bromide ions, and its E0 value that was provided over there is 1.07.
Okay. Iodate ions are these, and these are bromide ions. As its value is greater, which means it will undergo reduction, and its value is smaller, so it will undergo oxidation. ये बात सबको clear है? The one with a smaller value, in that half equation, the back oxidation take place, and the one with a greater reduction potential value or the greater electrode potential value will undergo the forward reaction or the reduction reaction. ये बात याद है सबको? तो हमने वैल्यूज की बेसिस पे डिसाइड किया है कि कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है. अच्छा, here the electrons are being gained, so the forward reaction is reduction. But if you look over there, here also the electrons are being gained, so the forward reaction is reduction and the backward reaction is oxidation. Is this understandable? ठीक है, तो यहां से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इधर फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए एंड हियर द बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस. अच्छा, अब अगर उन्होंने फिजिबिलिटी फाइंड की है तो फिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई थी कि वी विल यूज ई नॉट इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन की वैल्यू किसकी है? फर्स्ट हाफ इक्वेशन की है, डेट इज पॉजिटिव 1.19 माइनस ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव 1.07 है. तो जरा सॉल्व करके कोई मुझे बता रहा है कौन क्या आंसर आएगा? 7 and 19, 12. 0.1 and it's a positive one. Yes. So positive 0.12 volt. So if you are getting the answer positive, then you can say the reaction is feasible, and for that the answer that E naught cell or E cell is positive. So here we can, after showing this working, I can say it is feasible as E cell is positive. जो हमने डिफरेंस निकाला है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फीसिबल है. जी, ये रिएक्शन यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई बात पूछनी है यहाँ तक तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए. Okay, then iodate 5 ions, IO3 negative, reacts with sulfite ions in acidic solution at pH 5 as shown. So here we have the reaction. The initial rate of reaction was found to be first order with respect to iodate ion, first order with respect to SO3 2 negative ion, and first order with respect to hydrogen ions. Write the rate equation for this reaction stating units of the rate constant K. Okay, so अगर मैं rate expression लिखूं तो rate expression is equals to K, concentration of iodate ions raised to the power 1 as its order is 1 times concentration of SO3 2 negative ions raised to the power 1 as there are, as its order is first again, and with respect to hydrogen ion. So concentration of hydrogen ions raised to the power 1. So that is your rate equation. अगर ऑर्डर सेकंड दिया हुआ होता तो हम पावर में जो है स्क्वायर पुट करते, और अगर ऑर्डर किसी एक रिएक्टेंट का 3 दिया हुआ होता तो हम जो है रेट इक्वेशन में उसकी पावर 3 प्लेस करते. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. जी, सबको क्लियर है? नाउ यूनिट ऑफ के. अच्छा देखें, यहाँ पे आपको रेट का यूनिट दे दिया, बाकी सब हमने कॉन्सेंट्रेशन पुट किए हैं. तो अगर मैं के को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास
इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन क्यूब, बिकॉज नीचे 3 कॉन्सेंट्रेशन हैं तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर जो है क्यूब हो जाएगी। तो रेट का यूनिट क्या दिया हुआ है मुझे, मोल per dm cube per second, and here I got mole per dm cube raised to the power 3। तो ऊपर वाला मोल पर डीएम क्यूब नीचे वाले एक मोल पर डीएम की यूनिट से कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद द मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। तो अगर हम इसकी फर्दर वर्किंग देखें तो व्हाट वी विल लेफ्ट विद सेकंड इनवर्स ओवर मोल स्क्वायर dm माइनस 6। तो मैं इन दोनों को न्यूमरेटर में ले आऊंगा तो इट विल बी मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स एंड dm रेज टू द पावर 6। जी तो यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए। Yes, is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Now next part. The rate of reaction depends on the pH of the solution. Assume all the other concentrations remain same. Use the expression x is equals to rate at pH 5 over rate at pH 4 to calculate the value of x. Okay. तो उन्होंने आपसे क्या कहा है कि बेसिकली द रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। अगर कॉन्सेंट्रेशंस को सेम रखें तो सिर्फ पीएच वैल्यू से रेट इफेक्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप एक्स की वैल्यू बताएं, यानी कि अगर एक रिएक्शन पीएच 5 पे हो रहा है तो उसका जो रेट है ओवर द रेट ऑफ अ रिएक्शन वेयर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक्स होगा और उस एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके तो आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या होगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? Sir, जो equation है pH की उनको rearrange करके concentration of H plus signs मिलेंगे। ओके गुड 10 to the power negative 5 over 10 to the power negative 4। ओके तो अगर हम ये बात सब याद रखिए, अगर आपको पीएच गिवन हो और आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी हो तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू पीएच 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो एट pH 5 concentration of hydrogen ions is equals to 10 raised to the power minus 5, and at pH 4 concentration of hydrogen ions is equals to 10 raised to the power minus 4। तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0.tetra01 and what you will got over here 0.0001। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? जी Yes, sir. ओके तो हम रेट, दोनों के रेट का रेशियो है और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है। और पीएच बेसिकली क्या होती है, इट्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बेसिकली रेट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एट pH 5 divided by concentration of hydrogen ions at pH 4।
तो जरा दोनों को डिवाइड करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। 0.1. 0.1. So the value of x will be 0.1. यहां तक क्लियर है सबको? जी, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। Yes, is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's move to the question number 3. Okay, that is question number 3. Complete the electronic configuration of an isolated gaseous nickel 2 ion. Okay, so for that, if it's a nickel 2 positive ion, and if you look at the proton number of nickel, it's 28. Have a look over here. Here you have a nickel, it's 28, right? So it means nickel atom have a 28 electrons, but here in nickel 2 positive ions, the number of electron must be 2 lesser than the atom. So I will subtract 2 from 28, which gives me 26 electrons in this nickel 2 positive ion. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. So if you write the electronic configuration for the 26 electrons, it would be 1s2, 2s2, 2p6. I have filled 10 electrons. 3s2, 3p6. Okay. 4s0 and 3d 8. 8. वेरी गुड, 3d8 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखिएगा 4s में से जब भी आयन बनाते हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होते हैं, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था, तो 3p6 के बाद मैंने 4s को स्किप कर दिया और रिमेनिंग जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे 3p6 के बाद, उनको हमने d में रख दिया, क्योंकि d की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ओके, सो इफ आई नीड टू फिल दिस, कितने इलेक्ट्रॉन्स अब डी में शो हो रहे हैं? 3d में 6। टोटल इन्होंने कितने शो किए हैं? 8। सो 7th over here and 8th over here, and 4s must be empty because it's a nickel ion, so the electrons from 4s are actually knocked off or removed. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, next part, explain the origin of color in transition element complexes. इस तरह का क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करें जो हमने मार्च का क्वेश्चन किया था उसमें भी आया था। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या रीजन है? बेसिकली as ligand bonds datively the d orbitals split into two different
ये बात यहां तक क्लियर है? टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट हो जाता है। देन electron from lower d orbital to higher d orbital electron from lower d orbital jumps to higher d orbital as electron ओके तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों जंप कर रहा है? बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, आपको लाइट शो हो रही है, जो है वो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है। और जब लाइट एब्जॉर्ब की है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है, जो कि कलर आ रहा होता है। सो हेंस color observed is complementary to the color absorbed। ठीक है, तो जो कलर हमें शो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उस कलर के जो एब्जॉर्ब हो गया। इसमें किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अपना डाउट क्लियर करें, अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी, सबने ये कर लिया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लेट्स मूव। ओके, हेक्सा एक्वा निकल 2 सल्फेट निकल 2 आयंस। अब आपको उन्होंने बता दिया कि हेक्सा एक्वा निकल 2 आयंस हैं जिनका कलर ग्रीन है। दे फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिटेट विद हाइड्रोक्साइड आयन in equilibrium 1. Okay, here we have a green precipitate and blue complex with ammonia in equilibrium 2। और उसका क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है एक्वस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का। यूज द ली चैटलियर प्रिंसिपल टू सजेस्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेन व्हाई व्हेन एक्वस अमोनिया इज एडेड explain why when aqueous ammonia is added to dropwise to nickel H2O6 a green precipitate is formed। okay, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ग्रीन प्रेसिपिटेट यहाँ पे किस चीज के फॉर्म हुए? Hydroxide ions. सॉरी, Hydroxide ion concentration increases. ओके, So yes, I hydroxide may ions concentration increases, but the precipitates are not of ions. Precipitates are, remember, always of a compound, so there must be a compound that is formed। Nickel hydroxide. nickel hydroxide. yes, nickel hydroxide। so basically
Okay, we are adding the ammonia, but we are getting the hydroxide ion. We are getting the hydroxide as a compound. So the reason for this is basically when we talk about the aqueous ammonia solution, in aqueous ammonia solution, ammonia molecules are reacting with water and establishing the equilibrium between ammonium ions and hydroxide ions with ammonia and water molecules. So here there are the hydroxide ions. So initially when ammonia is added, these hydroxide ions initially reacts with the transition metal to form the complex. Is this understandable to everyone? Yes, sir. So this is to So balance the increase in hydroxide ion, right? can you repeat, Ahmed? Sir, this is to the precipitate forms to balance the increase in hydroxide ions, right? Yeah. Okay. Okay. So what will happen on adding aqueous ammonia? The concentration of hydroxide ions increases, due to which the position of equilibrium 1, because we have added the aqueous ammonia in equilibrium 1, right? So the position of equilibrium one shifts to right, and more nickel 2 hydroxide formed, and the green precipitates are of nickel 2 hydroxide. Is this answer is clear to everyone? Yes, sir. Okay. Next part. Explain why when a large excess of aqueous ammonia is added to hexaquanickel 2 positive ion, the green precipitate dissolves and a blue solution is formed. Okay. So how can we state that if the large excess, see there are large excess of ammonia, and here when the small quantity of ammonia is added, not ammonium ions or not ammonia, only hydroxide ions are react, which shows in equilibrium 1. But equilibrium 2, there are 6 moles of ammonia, which is showing that we are using excess of the ammonia. So if the excess of the ammonia is being added in equilibrium 1, oh, sorry, equilibrium 2, the equilibrium shifts to the right. Okay. So now you are observing the equation and I am writing the statement. Due to increase in concentration of aqueous ammonia, equilibrium shifts
to the right. जी यहां तक सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो बेसिकली अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम 1 राइट पे शिफ्ट होगा। सॉरी, इक्विलिब्रियम 2 की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम 2 राइट पे शिफ्ट होगा, और अगर इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा सो मोर, इक्विलिब्रियम 2 में प्रोडक्ट क्या बन रही है? तो बेसिकली 1 मिनट, सॉरी, हमारे पास प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रही है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? NiNH3 6 and they have 2 positive charge forms. जी ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसी वजह से आपके जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं वो डिसॉल्व भी हो जाएंगे। as due to increase in concentration okay, just give me a minute. As due to increase in concentration of NiNH3 6 का क्या कलर है? ब्लू कलर है। So due to the increase in the concentration of this ion, solution turns blue। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्म होगा तो आपको कलर ब्लू मिल रहा है। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? अगर इसमें किसी को कोई बात पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, the complex ion NiBr2CN2 2 negative shows stereoisomerism। तो देखें कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं और मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? निकेल है। फोर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर सिस ट्रांस है तो यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि सिस ट्रांस होने की बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये टेट्राहेड्रल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिस ट्रांस बना रहा है या स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कर रहा है और उसमें सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो याद रखिएगा वो टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्क्वायर प्लानर होगा। ये देखिए मैंने नीचे निकल के साथ स्क्वायर प्लानर में 4 बॉन्ड्स बना दिए। अब अगर मैं
दोनों के ब्रोमीन एक दूसरे के नेबर में रखता हूँ और दोनों के नाइट्राइल्स एक साइड पे रखता हूँ। तो अब देखें दो सेम ग्रुप्स के बिटवीन कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है या वो नेबर में। तो बेसिकली ये सिस स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो गया। और अगर मुझे ट्रांस स्टीरियो आइसोमर बनाना है तो यहां तक क्लियर है सबको। अब देखिए मैंने इनको अपोजिट बनाया है। सो यहाँ पे जो सेम आइंस हैं, जो सेम लिगेंड्स हैं, वो 180 डिग्री पे जा रहे हैं। जिस तरह आपके पास देखें दोनों साइनाइड डायगोनल हैं और दोनों ब्रोमाइड डायगोनल हैं। तो ये केस क्या होता है, ट्रांस का। ठीक है, ये सिस का है और वो ट्रांस का है। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि स्टेट द टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म की ये टाइप कौन सी है, सिस ट्रांस कहलाती है, ज्योमेट्रिकल कहलाती है। तो इधर यू कैन राइट सिस ट्रांस ओवर हेयर और यू कैन राइट ज्योमेट्रिकल ओवर हेयर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अगर किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। मंडे वाली क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो टुडे आई एम कीपिंग द क्लास टिल हियर एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 we will start or we will resume on Monday. Okay, okay, take care everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.